Hi ji. So today we're going to revise the basics that we did last time. So briefly, we can revise the introduction to the PLC hardware. Here you can see a PLC installed in a in a control panel, and that's a typical installation that we see normally in the industry. Uh, but that won't make enough sense unless we look at it from this perspective. So there's a diagram which I want to show, this one. So on the one side, we have terminals where we can connect input devices, and input devices can include like push buttons, limit switches, and proximity sensors, for example, inductive proximity sensor or capacitive proximity sensor. These are the sensors which detects the presence of an object in front. So let's say कन्वेयर पे कुछ एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, it's moving on a conveyor and you want to detect whether it has reached that certain point or not. On the other side of the PLC, we have these output terminals. And then from there, we can connect devices such as a light bulb. A light bulb is something which you give the output to and it will, let's say, turn on or off. Similarly, there might be a solenoid. It's an electrically actuated valve, mechanical valve, normally used for controlling the flow of liquids and gases. And then we have this contactor, which is a way to connect other output devices, for example, motors. So this is a typical, and then the program sits in the brain of the CPU, and that program is normally called ladder logic. So if you look at it here, so the CPU is in there in the PLC. It's a chip. It's just like you have Intel i5 or i7 in your PC. They also have processing chip, and then they have memory where we have a separate memory for storing the program and other memory for storing the data. Okay, and on the left side you see that there are input sensing devices connected here. Okay, so these are the physical diagrams of the devices, but these are the symbols that we generally use. Which, for example, this one is a push button, which is normally open, a push button normally closed. And then we have other devices, for example, this is, can anyone tell me what this is? What symbol is this one? Pressure G? pressure switches. Pressure Pressure switches. switch. And the bottom one is anyone? Level. Mechanical limit switches. Limit switch. It is this guy. Good. And similarly, on the output side, we might have a solenoid, uh, output load like a motor, other devices. So that is how, so now in this lecture, our focus is on programming. And for that, we have already revised some, yeah, so this cycle is also important. We have to scan continuously all the inputs one after the other, and it happens at a megahertz. I mean, in a fraction of a second, that you have to listen to every sensor and then you have to do some processing and then you compute the output based on the logic diagram, and then you just send that to the output device and then you sense the input again. So this scan cycle is, it refers to taking the input, reading the inputs uh, from the sensing from the input devices, and the second step is executing the control logic in the diagram, whatever logic we have put into. So, and if there is any communication request, for example, there might be other devices which are other PLC or other device or computer which is communicating with the PLC. We have to listen to that also. CPU has to do some diagnostics, but ultimately once the processing has generated an output, that output will be written to the output devices. So this is a typical, it's called controller scan sequence, the PLC scan sequence or scan cycle. And it happens in
extremely fast. ऐसा नहीं है कि let's say आपने इधर सेंसर ने एक 1 देना था, उस वक्त आप इस वाले सेंसर को सुन रहे थे, स्कैन कर रहे थे, and you missed that one. No, that one, at least it will stay there for microseconds or milliseconds. That's still fast enough to scan it. And the device will not even know that there are other devices connected. Every device will get a full attention of the PLC, of the CPU. Okay, so we then revise these few diagrams. This is a relay logic, we call it. Um, so basic relay instructions are composed of contacts as input and coils as output. Okay, for example, we saw that uh, if coils output we represent with the parentheses like this. Wait a second, like this. It doesn't matter, yeah. Or we just show it with a circle. That's our output. That actually represent the coil of a relay. Okay, and then inputs, and then we have a normally open input and normally closed. And then if we look at the, so this one is called a ladder logic, this one is called relay logic. I mean, it's the same thing. One is the way symbolically showing the, let me show you this, yeah, symbolically showing the devices like switches and push buttons and all that, and pumps. This is called relay diagram. But if you look at the from programming point of view, a push button is represented in the same way as the float switch, because all that matters to us is a certain bit is in the inside the CPU. We want it whether it is 1 or 0. So if a button has not been pushed, it will represent 0 in this normally open uh, style. And if it is pushed, in that bit location will have 1. Now the same can happen here. If the float switch is open, this will store 0. If it is closed, it will store 1. So here the symbol is the same, although the physical devices are different. One is a push button and another is the float switch. Okay, but for programmer, it makes our life easy when we just focus on the bits, whether that bit is 1 or 0. That's all matters to us. We don't care which kind of sensor it is coming from. Okay, or even it could be an internal bit. We'll see later. It could be an internal bit that we can use in the program, and we use internal bit 1 0, or the external which are coming actually from sensors, we use it the same way. So this diagram is called ladder diagram. Okay, so this is that's the difference between the two. Okay, so we did this last time. This one, it's a relay ladder logic. Well, normally these names are used interchangeably, but this is a way to show, this is one way to show, but if you go to the programming software like Logix Pro or others, then we better stick to this, okay? Because we might run out of these symbols, we might forget some, but we never forget as a programmer these symbols, okay? So can anyone explain what's happening here? For example, this is a push button, this is a limit switch 1, this is another limit switch, and we have this lamp, let's say. So what's happening? Can anyone explain the application of this? So if you push the push button, the output and the limit switch 1 is in close contact, then the light is on. And for some reason, if the limit switch 2 is closed and limit switch 1 are closed, still will the light will be on. Okay, so we cannot, yeah, visualize the application from here, but it is actually the OR logic between these two guys, and the output of this is ANDed with this. Okay, so we can, in words, we can say that the lamp is on if limit switch 1 and
Yeah, like I can do like this. The lamp is on if ls1 and pb1 or ls2 give true. Yeah, or on or closed in this case. Yeah, and we can also write it and symbolically. Normally for AND gate we use this thing, AND gate. The symbol for AND gate is yeah. So we're ending this and the symbol for OR gate, if I can find it. Oh, OR gate. Yeah, this was the AND, and this is normally used. And if I can find the OR gate, yeah, so let's pick it from the internet. So this is it. Yeah, this is NOR, this is OR. And similarly, we can bring in the symbol for the AND gate. So what's happening here is actually we are having this guy. Yeah, so these two are getting ANDed. So, so we actually are, yeah, that's another way to show it. So this one is our PB1. Input 1 is our PB1. Input 2 is our limit switch 2. And the output of that is getting ANDed with ls1. And then the output of that is going to PL. Yeah. So this is another way so even if you don't write it in an English like statement, this is another way to draw that logic diagram. Okay. And it helps when things get complicated. Okay. Yeah. सर इसको हम नार गेट कह सकते हैं. नॉर नहीं है, नॉर में
इधर सर अगर LS1 जो है हम 1 कंसिडर करें इसकी आउटपुट अभी LS1 और क्लोज 0 कंसिडर करें, नहीं, वो हम क्यों कंसिडर करेंगे? नॉर्मली आप ये जो है ये नॉर्मली ओपन है, so यस सर, you will use this for that, this symbol. So as long as you're using that symbol, so it is true only if that guy comes in contact, otherwise it's false. Okay, so otherwise that is false. So if I recall that normally open thing, this one, this is called examine if closed. So because its corresponding memory bit is a logic 1 when the field device that control it is closed. This logic will be 1. Here we will only get 1 if that device is closed. So this instruction is also called examine on contact, or it's called examine if closed. So we are just examining whether it is closed or not. If it is closed, then it is 1. If it is open, so for example, different combination we can try. Let's say this is closed. So if this is closed, this will give us 1. This is true because we were looking for closed. And if that one is open, the corresponding bit will be 0 because it's not closed. It will be only true if it is closed. So 1 or 1, the output will be 1 because और का कोई भी input 1 हो जाए तो output हमें 1 देता है. Now this guy, if it is open, this will be 0 and this output will be 0 because AND के output को 1 होने के लिए दोनों inputs का 1 होना जरूरी है. And if somehow someone closes that and we are looking for the closing, for us closing is true. Examine if closed. Yes, it is closed. Then this will also become 1 and the output will become 1. So this is how you look at it. So if I can write this in the in words, so EB1 is closed, LS2 is open, LS1 is closed, therefore the output is on or high. Okay, so now you can try different combinations. For example, you might be told that nothing is closed. Then this is 0, this is 0, this is 0, the output is 0. You might be told that only this is closed, LS2 is closed. Is this going to be on? No, it's not going to be on because this guy is not closed. So that you have to be careful about. Let's look at another example. We normally have this start and stop button. They comes as a single station. Green is normally for turning on the machine, the process, and red is for turning it off. So we last time saw that this is a self-locking mechanism. This start is representing the normally open this, and the stop is normally closed. That's why it's normally red color. In that case, we will use the examine if closed instruction. And if it is closed, then this guy will be true. This guy will be true. But in the second case, we will use the other symbol, this one. This is examine if open. It will only be because its corresponding is 0 if the device that control it is open. If the control is open, then it will give us 0. Otherwise, it will give us 1. In the normal state, it will be true. It will be true. And we are checking if it is open. Okay. If it is open, then the bit, the logic will be, the corresponding memory bit is a logic 0, which is true condition. So remember, अगर मैं इसको जल्दी से draw करना चाहूँ, तो it is like this.
I bring those previous diagrams quickly. This guy and this guy. Yeah, so the first two are in the OR. So sorry about that. The first two are in the OR condition. So this is our start. And the second is the CR1 used as an input. So this is our CR1. And then they're ORing, and then the output is ANDing with this, but it's in the normally closed condition. So you're ANDing the input of the AND gate, one is here, it's coming from here, but the other one is coming from this, but it's a normally closed. So it's a NOT function has been used, remember? Its logic is opposite to the previous one. So let me bring a NOT gate, NOT. Okay, I want the one which doesn't have yeah, this one. All right, so तंग कर रहे हैं यार ये let's pick up anyone, this one, copy, yeah. So now let's crop it. We just quickly take the NOT gate from here. Yeah, so we have to do the NOT here because that's a, yeah, so this is a, and then the input of this is stop. Now let's check. And the output is CR1. It's going to CR1, and it also goes to a solenoid. Okay, so we can have two outputs. We can even write like this. Sorry, and like this, and the other one goes to a solenoid. And what we are doing is we can even complete the cycle by bringing this guy back and going here as an input. Because once we turn it on, we want to see whether it is true or not. Now let's examine different situation. So the first question is, what will happen if, just a random question, give the output. If start is open, relay is already not running, energized, best word, and and stop is closed. Sorry. If the start button is open, yeah, so what is the output? Sorry. So now if start is open, then the corresponding bit to this switch will be 0. Yeah, because it's open. Okay. And relay is not already running. So what we will do is we'll consider it as 0.
we'll consider it as 0, and the output of this therefore will be 0, because anything if the inputs of if any input of an OR gate is 0, the output is 0. That's what the truth table says. And start is open, and start is closed. So if it is closed, let's say it gives us 1 because it's closed there. But we're doing we'll be using this symbol. So this uses a NOT function. Remember, if you remember somewhere in the previous lecture we did that NOTing. Okay, so this NOT will give us 0, and the output will be 0. CR1 will be 0. Yeah, so that's the answer. That's the answer. At the stop is closed, so what we will get is we'll get CR1 will be de-energized, will stay de-energized. Okay, so the output will not run. But now let's say I push the start button. If I push the start button, wait a second. Yeah, so no, this button for this we'll be using examine if open. So examine if open is true, but it gives logic 0. Sorry, if it is, it will be giving us 0, and that's true because it's closed. Okay, but we are knotting it here, so we'll get 1 here. Okay, the output will still be 0. Now, if we see another example, if the start is closed, now let's see, the relay is already not energized and stop is closed. So what will be the CR1? So if the start is closed, this will be 1. And if any input of the OR gate is 1, the output will be 1. The other one is closed, so this is true. Okay, 0 is true. Why? Because we are using this symbol, the normally closed symbol. Okay, and then that we're knotting, so it will become 1 here, and 1 and 1, it will give us 1. The relay will be energized. So this is the solution. These are 2 examples. There are other examples also possible. Let me see that NOT function we did last time. NOT function. 503. Yeah. So this is a NOT function. We see this in 2110. The foot switch, normally closed foot switch, is the input connected in series with a motor starter coil that operates as the output. When the input switch is not activated, activated means it's not open, the coil is energized. You have done nothing. You haven't activated the switch, but the coil is still on because it's a normally closed one. When the foot switch is pressed, the output is not energized. It's already pressed. Okay. Sorry, when you press it, that means you activate it. It will be not energized. This circuit performs the NOT or inverter function because the output is always opposite the input. Okay. So if we have done nothing, so it will be giving us 0. If we do pressing, this will be 1. This will be 1, and actually a NOT function is being used. That NOT function is, it helps if you put a NOT function here. Okay, so this is, and let's see another example. uh, yeah, let's do this one. What is this one doing? Uh,
Yeah, we have two buttons, one for forward, moving the motor in the forward direction, and another is for moving the motor in the reverse direction. And they will only work if we press these buttons. So at a time you're pressing either forward or reverse. Okay, and there is a stop button also. And when you push the forward button, there must be some LED which you have to turn on as an indication. And when you push the the reverse button, it will be uh, going in the reverse direction. Okay, so now what happens is if you press the stop button, everything should stop, obviously, because that connection from the L1 to L2 is completely lost. Now there are two possibilities. We either now push the forward button or we push the reverse button. Okay, let me see if the recording is on. Yeah. So if you push the relay, the forward button, and this is in a normally closed condition. What is this R2 connected to? Wait, we have to see what is R2 connected to. This is hmm, yeah. So this is actually a normally closed condition of this relay, the R. Okay. So when you want it to move in the forward direction, you want to make sure that it's already not moving in the reverse direction. What if it was moving in the reverse direction? If it was moving in the reverse direction, this guy will be open. If it is not moving in the reverse direction, this guy will be closed. So because we are doing the opposite. If it is true, true mean we are moving in a reverse direction, this logic will be false. It will be zero. It will make the circuit open. But if it is off, this logic will be closed. It will be true and will move in the forward direction. Same is the condition here. You have to check while when pushing the reverse button, you have to make sure the motor is not already moving in the forward direction. Okay, so that relay input is used here. And similarly, if you once you push it, you want it to remember that it's already moving. So if it's already moving, keep it moving. I don't have to keep the forward button pressed all the time. I just press it once, and the next time the motor, the PLC knows that, hey, if it is moving, keep it moving. This will be only true if it is closed, if it is on. Okay, so this is a self-locking mechanism for the forward, and this is a locking mechanism for the reverse moving. So this is another example, and if you look at yeah, it's the same thing. Yeah, forward start, reverse, forward. Yeah, and if we want to try this in the Logix Pro, yeah, we can. But I want you to draw this diagram for that. So now the logic diagram, the equivalent ladder logic converted to digital gates. If you want to convert it to digital gates, so you start from this, you take start from the start button, and let's say it's normally open. When you push it, it will be closed. But the corresponding command that we are using examine if open condition. So we have to use this NOT gate. And remember, we use this NOT gate here also, because this was the normally closed button, the stop button. Okay, so it works opposite to our usual logic. So that's why the NOT gate is there. I'm using the same logic here, so that's why you see the NOT gate here. And then after that comes the forward switch. So forward switch, I just push one more button here. Okay, and then it's getting odd
with the forward motor output. So I want that the second output is already coming from here. We are checking if it is true, then if it is 1, then it will be the output will always be 1 unless somebody stops it. And then you move to the next one and you check the reverse motor, and the reverse motor direction is coming from here, and I have to use the NOT gate because it's a normally closed thing. Then look at this instruction. Okay, so that NOT has been used, and then I'll use the AND gate because this thing, this OR gate, is used as an input to the AND gate. Yeah, so there are two inputs to this. One is the output of these two guys. One is forward and one is this. So this one is that. And I have to AND the output of this with that, with the reverse motor. And the reverse motor has to be NOT because we are using the opposite logic. And then we give the output of that AND to the motor. So now the question can be asked, and I want you to answer. I just show you the AND gate. So in which direction, example, in which direction the motor will move if stop is closed, start is start is open, um, and the motor is already moving in reverse direction. Yeah, in which direction the motor will move if stop is closed, start is closed, and the motor is already moving in the reverse direction. So now what you have to do is you have to tell me what will be the effect on the process. In which direction the motor will move if the stop button is closed, the start button is pushed or is closed, it means closed, and the motor is already moving in the reverse direction. So I want you to give me the answer. I'll take this to next slide and then you have to give me the answer. I give you 30 seconds to give me the answer. The answer could be the motor will keep moving in reverse direction, or it will start moving in the forward direction, or it will stop. I can ask any one guy randomly, so better everyone attempt it. I'm not just waiting for one guy to answer. I can ask any one of you. Just put the logic there. Oh, there are two buttons. The FWD start button is pushed. This one, there are two buttons because there were two buttons here. So this button has been pushed. G.
You can type in the chat also. So timer instructions, what are timers? Timers they are output instructions that are internal to the PLC. टाइमर के ये इंस्ट्रक्शन आउटपुट हैं ये टाइमर के इंटरनल है. दे डोंट रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल हार्डवेयर लाइक अ मोटर और अ सोलेनॉइड. नो, they are the internal outputs in the PLC. Okay, they are capable of providing timed control of devices. तो normally let's say आप कहते हैं कि भाई एक limit switch जब मुझे कहे कि भाई there is an obstacle, an object on the conveyor, तो लेट्स से 2 सेकंड के बाद मोटर चल पड़े. मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर ने हमें कह दिया कि भाई देयर इज एन ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मी. आप कहते हैं कि भाई ये काम 2 सेकंड बाद हो. फौरन मोटर स्टार्ट करने से मैं करूं कि भाई अब वो 2 सेकंड आपके लिए काउंट करना, यू नीड अ टाइमर. पीएलसी के अंदर 2 सेकंड काउंट करना या आधा सेकंड या 1 सेकंड काउंट करना, ये टाइमर आपको इसमें हेल्प करेगा. तो लेट्स स्टडी दिस. और इस तरह you will be timing a lot of operations in industry, in industrial applications. PLC timers perform various functions such as delaying an action. जिस तरह मैंने आपको कहा कि you got something in front of the proximity sensor and you want to delay the turning on of the conveyor motor. Okay, so that's a typical application for timer. Causing an operation to run a predetermined period of time. आप चाहते हैं कि भाई ये मोटर प्रॉक्सिमिटी सेंसर जब मुझे कहे कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो 2 सेकंड के बाद चले और 3 सेकंड के लिए चले. तो वो किसी खास प्री डिटर्मिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने, इसके लिए भी आपको टाइमर चाहिए. और रिकॉर्डिंग द टोटल एक्यूमुलेटेड टाइम ऑफ कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट इवेंट्स. और आप चाहते हैं कि भाई जब से पीएलसी ऑन हुआ है लेट्स से, या जब से मैंने स्टार्ट बटन क्लिक प्रेस किया है कितना टाइम गुजर गया है. यू वांट टू नो. मे बी घंटा गुजर गया, मे बी आधा घंटा गुजर गया, 10 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए. तो कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम, that's what the timer helps you to do it. Okay, a timer is activated by changing in the logic continuity of its rung. Okay, timer एक्टिवेट कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि इसके लेफ्ट पे आपने क्या लॉजिक इंप्लीमेंट की है, वो इस टाइमर को एक्टिवेट करेगा. And we'll see examples. The run condition is most often controlled by examine instruction. तो ये examine off और examine on दो तरह की, या normally open या normally closed जिसको आप कहते हैं. After the time interval has expired, the timer output is energized. The timer output here, EN, ठीक है, energized, causing an NO or NC, normally open or normally closed contact it controls to change its logic state. These contacts can be used throughout the program as many as, okay. As each timing instruction is programmed into the PLC, as shown in this, the following information must be entered. Timer को use करते हुए आप चार चीजें enter करेंगे. एक symbol and address, ठीक है, like this one, कि भाई ये कौन सा टाइमर आप यूज कर रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है. तो दिस टाइमर इज टाइमर नंबर 4 0. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई इट्स एड्रेस फाइल इज रिजर्व्ड इन मेमोरी फॉर टाइमर. इस टाइमर के लिए मेमोरी में जो जगह रिजर्व्ड है वी कैन एक्सेस इट थ्रू दिस. ठीक है, a file address ranging from 0 to 255, this could be 0 to 25, must be entered after the timer appears to identify the location where the instruction is stored. Okay, इसके अलावा क्या है, टाइम बेस है. टाइम बेस इज 0.01. What is this? After the address is entered, program the time base value. Time base is a fixed time interval, usually 1 second, 0.1 second, or 0.0 second in length. One of the number is selected by the user. तो 1 सेकंड है, 0.01 सेकंड, ये वो टाइमर का बेसिक बुनियादी टाइम है जिसके थ्रू वो ज्यादा टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट आई मीन टू से इज
अगर आपकी घड़ी को आप देखें तो इसमें बेस क्या है, हमारी आम घड़ी का बेस क्या है? एनीवन? मतलब मिनट किन चीजों से बनता है, घंटा किन चीजों से बनता है? व्हाट इज द बेस यूनिट? सेकंड। सेकंड। लेकिन पीएलसी में हमारे पास 3 बेस पॉसिबल है, 1 सेकंड, 1 मिली, नो, 10 मिली सेकंड, 0.1 सेकंड ना, नहीं, 100 मिली सेकंड, और 0.01 सेकंड, विच इज आई थिंक 10 मिली सेकंड। तो ये 3 बेस पॉसिबल है। फिर इसके अलावा एक और चीज हम सेट करते हैं, प्रीसेट वैल्यू। प्रीसेट वैल्यू ये है, after the time base is entered, the user is prompted to enter a 3-digit number to the right of the preset, which represents a preset value. The value entered indicates the amount of time that needs to expire before action is taken. ये वो amount of time है जो आप सेट करते हैं, ठीक है। आपने इधर 0.01 बेस दे दिया और प्रीसेट सेट कर दिया 500। इसका मतलब है 500 बेस यूनिट्स के बाद ये टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब है 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो इससे आएगा आपके पास कितने सेकंड? 500 टोटल है मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो आप टाइमर 5 सेकंड के लिए सेट कर रहे हैं। लेट्स से प्रीसेट आपके पास 100 और टाइम बेस 1 है, तो फिर 100 टाइम्स 1 आप 100 सेकंड्स के लिए उसको सेट कर। प्रीसेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये 32,000 तक हो सकती है। तो लेट्स से आपने प्रीसेट वैल्यू 30,000 सेट कर दी, 30,000, और आपने बेस सेट किया हुआ है 0.1, तो 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअली आप टाइमर जो इनिशलाइज कर रहे हैं वो 3,000 सेकंड्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू ये होती है कि जब टाइमर चल पड़ता है तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू वो टाइम बेस को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल 0 होता है, फिर 0.01 सेकंड के बाद 2 होता है, फिर 0.03 सेकंड के बाद 3 होता है, 0. ये आपको बताता है कि अब तक कितना टाइम गुजर गया है। एक्सपायर मैंने कब होना है? 500 टाइम बेस के बाद, और अब तक मैंने कितने क्यूमुलेट कर लिए हैं। तो वो जब हो जाए, क्यूमुलेट जब इसके बराबर हो जाए, बिलीव सो, तो लेट्स सी डन बिट हाई हो जाता है। लेट्स सी another display shows the abbreviation accumulated followed by 0. This information represents accumulated value equals 0. When the timer is activated, an internal clock causes the accumulated value to begin incrementing from 0 to as it counts elapsed time base interval. The highest value that can be accumulated is the same as the preset because उधर ही जाके इसने रुकना होता है, ठीक है। Each timer instruction occupies 3 words of an element in the timing file. जो इसका timing file है मेमोरी में, उसको अगर आप देखें तो 3 words ही ऑक्यूपाई करते हैं। 1 word is 2 bytes. लास्ट टाइम मैं बता चुका था। 16 बिट्स हैं इसमें। ये जो 15 आप देख रहे हैं ये बिट नंबर 15 है, इसका मतलब है इधर बिट नंबर 0 होगा। ये 16 बिट्स हैं वर्ड नंबर 1, फिर अगले 16 16 से लेके 31 तक वर्ड नंबर 2, फिर 32 से लेके 47 तक ये वर्ड नंबर 3, ठीक है। 3 वर्ड एलिमेंट है इसमें। बिट नंबर डन, बिट नंबर 13 जो है वर्ड नंबर 1 में DN बिट है, TT बिट है और EN बिट है। ये इंटरनल है, ये हमें नहीं चाहिए। प्रीसेट वैल्यू इधर स्टोर होती है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू इधर स्टोर होती है। जाहिर बात है मेमोरी में कोई जगह है जहाँ पे ये वैल्यू, ये चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है, जहाँ से हम इसको रीड भी कर सकते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो ये 3 बिट्स हैं, ये ज़रा और से देखें। द इनेबल बिट इज सेट when the run condition is true and resets when the run condition is false, ठीक है। The enable bit is used to energize. अगर enable bit आपका सेट है तो इसका मतलब है टाइमर चल पड़ा है। इधर जो कंडीशन थी वो ट्रू है, उसने टाइमर को ट्रिगर किया और ये enable से आपको पता चलेगा कि इस वक्त टाइमर ऑन है, ठीक। टाइमर जो है ना वो enabled है। और DN bit आपको तब हाई होगा, the primary output of the timer, when the accumulated value equals the preset value, जब वो टाइमर जो है ना आपका और टाइम जितने टाइम के लिए आपने इसको
सेट किया है वो टाइम जब गुजर जाए तो डन बिट आपको 1 हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जो 3000 सेकंड्स के लिए आपने उसको इनिशियलाइज किया था वो 3000 पूरे हो गए। और उसके बाद लेट्स से आप मोटर स्टार्ट करते हैं या उसके बाद कोई लाइट ऑन करते हैं, तो ये बिट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो बिट है टी टाइमिंग बिट, द टाइमिंग बिट is on whenever the timer is on, but the accumulated value is less than the preset value। ये टी तब तक मतलब इनेबल तो बस एक बार ऑन हो गया तो ऑन रहता है, टी उस वक्त तक ऑन है जब तक कि accumulation हो रही है, टाइमिंग हो रही है। जब वो प्रीसेट के बराबर आ जाएगा तो फिर डन हाई हो जाएगा, टी लो हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो हमें 3 बिट्स इधर आउटपुट पे मिलते हैं, इनेबल, डीएन और पता नहीं टी आउटपुट पे मिल रहा है कि इंटरनल है, विल सी दैट। ठीक है, अब सिंबल हम यूज कर रहे हैं टी ऑन, और एक और उसकी फिर एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। ठीक है, टाइम टी ऑन का मतलब है टाइमर ऑन, दैट्स व्हाट इट्स रिटन ऑन हियर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, when the run condition becomes true, the timer begins causing accumulator value to increment and bits 14 and 15 to set. ठीक है, when the accumulated value becomes equal to the preset value, the timer stops timing and the output energizes as bit 13 sets. Bit 13 is done, I think. Yeah, it's done. Bit number 13 is done. At the same time, bit 14 resets. Bit 14 reset हो जाता है टी, क्योंकि वो जो प्री एक्यूमुलेटेड वैल्यू थी वो इज नो मोर लेस देन द प्रीसेट वैल्यू, तो ये फिर जीरो हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि भाई वो दोनों वैल्यू अब बराबर हो गए। ठीक है, ये डायग्राम से सही समझ आएगी आपको। देखें, जब कंडीशन ट्रू होता है टाइमर के लेफ्ट पे, तो टाइमर रन कंडीशन जब ट्रू हो जाए, इसका मतलब है हाई हो जाए, तो इनेबल हाई हो जाता है, और ये तब तक हाई रहता है जब तक आपका डन बिट हाई नहीं हो जाता। जब तक जब डन बिट नहीं, सॉरी, तब तक हाई रहता है जब तक वो कंडीशन ट्रू है, ये हाई हो गया, ये तब रीसेट होगा जब डन रीसेट होगा। और डन तक कब रीसेट, अच्छा टाइमर कब ऑन था, जब एक्यूमुलेशन हो रही थी। ठीक है, जब एक्यूमुलेशन हो रही थी, इसका मतलब है कि 5 सेकंड्स के बाद एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर आ गई, और जैसी टी लो हुआ उसी वक्त डन बिट हाई हुआ, डन बिट हाई हुआ। ठीक है, तो ये 3 बिट्स हैं, ये हमें बताते हैं कि भाई टाइमर हैज बीन enabled, ये हमें बताता है कि भाई accumulation is still going on, it's not equal to the preset value, और ये हमें बताता है कि भाई वो जो टाइमर के जितने टाइम के लिए आपने उसको एक्टिवेट किया था वो टाइम गुजर गया। ठीक है, अब आपको इस एप्लीकेशन से ज़्यादा समझ आएगी, थियरी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन क्या करता है, an example of an application that uses timer on instruction is a high speed transfer line of canned food। ठीक है, वो कैन फूड के कैन आ रहे हैं, ट्रांसफर लाइन है और उसको कहीं से ट्रांसफर करना है। an inductive proximity switch is used to detect the movement of the can। हमने एक proximity switch लगाया हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि भाई कैन इस स्विच के सामने आया गया कि नहीं आया, कन्वेयर के ऊपर जहाँ से भी आ रहे हैं, हम बस सिर्फ इस इंतजार में है कि भाई वो कैन जो है वो इस proximity के सामने पहुंच गया कि नहीं। इफ द कैन्स बिकम्स जैम्ड अपलाइन द मूवमेंट स्टॉप्स। ठीक है, अगर कहीं वो जैम होता है तो मूवमेंट रुक जाती है, कन्वेयर सारे का सारा रुक जाता है। सिंस द कैन्स विल नॉट बी पासिंग द डिटेक्शन पॉइंट द टाइमर विल टाइम आउट। ठीक है, हमने टाइमर को सेट किया होगा कि यार अगर इतने देर के लिए कोई कैन नहीं पहुंचा हमारे तक, तो आप अस्यूम कर लो कि भाई टाइमर आउट एक्सपायर हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि भाई कन्वेयर में कहीं गड़बड़ है, वो चीज़ कहीं फंसी हुई है, क्योंकि उसने जितने देर में पहुंचना था वो देर गुजर गई है लेकिन वो चीज़ नहीं पहुंची। ठीक है, the output bit of the timer is programmed sorry, either to set off an alarm or to stop the machine until the problem is corrected। ठीक है, या तो अलार्म सेट करो उस टाइम आउट के बाद ताकि किसी की अटेंशन उस तरफ हो जाए और आके देखे कि वाकई वो कुछ जैम हुआ है कि नहीं, और या ये कि आप उससे मशीन को भी रोक सकते हैं। अगर लेट से अलार्म भी, दोनों काम भी कर सकते हैं, अलार्म भी जनरेट करें उधर सेफ्टी के लिए कन्वेयर को रोक भी लें, क्योंकि उसका मोटर भी तो पीएलसी के साथ कनेक्टेड है।
ठीक है, तो ये एक जबरदस्त एप्लीकेशन है सेफ्टी वाइज। यू डोंट वांट द कैन द फूड कैन्स टू बी जैम्ड। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट सिर्फ एक सिंपल पॉसिबल इंस्ट्रक्शन है जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है। लेडर इट्स अ कंट्रोल सर्किट है, उसका लेडर डायग्राम है, ठीक है। अब ये हमें क्या बताता है? एनीवन हु कैन गेस व्हाट इज दिस? ये किस चीज को शो कर सकता है? I13 सर इनपुट which input? इनपुट हम किस चीज से ले रहे हैं? स्टार्ट बटन। नहीं, स्टार्ट बटन नहीं है। स्टार्ट बटन हो तो स्टार्ट बटन की पहचान ये है कि वो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म यूज हुआ होगा, ब्रांचिंग हुई हुई होगी। वो तो इसमें, वो तो हम अस्यूम कर रहे हैं कि कहीं और हुआ है। इस वक्त इस पूरे सिस्टम में इनपुट क्या है? सर ये कैन नहीं, कैन तो ठीक है, वो तो मटेरियल इनपुट है, वो तो आ रहा है। पीएलसी को इनपुट कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? पीएलसी के किसी पोर्ट के साथ कोई अल्लाह के बंदे कोई सेंसर कनेक्ट किया है ना, जिससे आपको पीएलसी को पता चल जाता है कि भाई सामने कैन आया है कुछ। Proximity, sir. yes प्रॉक्सिमिटी, sir proximity या sensor प्रॉक्सिमिटी Proximity सेंसर, switch. नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली Yes. ओपन। इज इट नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन? ये सिंबल, क्लोज्ड है सर। हाँ ये सिंबल क्या शो करता है? क्लोज्ड, ठीक है। Close, sir. तो इसका मतलब है कि भाई the inductive proximity switch causes the examine off contact. This is examine off contact भी कहते हैं, या इसको कहते हैं examine if open contact, examine if open। तो इसका मतलब है कि to become true each time there is a gap between the cans। जब cans के बीच में गैप है, इसका मतलब है कि cans आपके इस फैशन में आ रहे हैं, इस फैशन में आ रहा है, बिल्कुल मुसलसल। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया हुआ है? हमने प्रॉक्सिमिटी लगाया हुआ है, उस प्रॉक्सिमिटी के सामने हमेशा कैन है। एक खत्म होता है तो दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो वो हमेशा क्लोज हालत में है। सॉरी, या अब डिपेंड करता है कि वो नॉर्मली क्लोज है कि नॉर्मली ओपन है। लेट्स अस्यूम कि हमने वो लॉजिक्स प्रो में कौन सा यूज किया हुआ था? proximity was normally closed, I think. Proximity here, yeah. If I click on this, yeah, it's normally open। और यहाँ पे हमने उसको as an examine if open यूज किया था, examine if open, ठीक है। तो examine if open, let me see कि this is examine if open, yeah। तो ये ऑलरेडी नॉर्मली ओपन है, ये क्लोज तब होगा जब इसके सामने ये आ जाए, ठीक है। तो हमने उसको इधर यूज किया हुआ है एज ए एग्जामिन इफ ओपन। तो मोटर को चलाना है हमने, तो व्हाई वी आर डूइंग एग्जामिन इफ ओपन इफ द बॉक्स इज नॉट, और अच्छा, जब तक बॉक्स उसके सामने नहीं है हम मोटर को चला रहे हैं। उधर लॉजिक इसके अपोजिट है, उधर उधर बॉक्स के बाद बॉक्स, कैन के बाद कैन है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब है। हमने क्या किया हुआ है कि भाई जब तक आपके सामने कैन है तो मोटर को चलाते रहा करें, मतलब कन्वेयर को। इसका मतलब है कि बीच में कोई गैप नहीं आया, लेकिन बीच में अगर एक भी बॉटल मिसिंग है तो इसका मतलब है कि कहीं जैम हुआ है, वो खाम खा, मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, तो अलार्म इशू कर दो, ठीक है। तो now if you look here, so this will go if there is a gap between the two cans. Now let's say you have detected the gap between the two cans, this condition will
this thing will go, the timer will start. अब timer जब start होगा तो can anyone tell me for how much time this timer will uh, for how much timer for how much time in seconds the timer has been configured? कितने सेकंड के लिए इसको हमने सेट किया हुआ? कितने सेकंड के लिए टाइमर को हमने इनिशियलाइज कर रहे हैं? सर 0.01 वो तो बेस है ना, और प्रीसेट क्या है? 4 4. 4 है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 0.04 4 multiplied by 0.01, सॉरी हाँ, तो 0.04, ये तो बहुत ज़्यादा कम है, ये क्यों? 4 multiplied by 0.01, तो 0.04 seconds, ये it's I mean practically yeah 40 milliseconds. तो इसका मतलब है कि अगर 40 मिलीसेकंड में भी आपके पास नेक्स्ट कैन आपको नहीं मिलता, if a new can does not pass within 40 millisecond, the preset value is reached by the accumulated value in the timer. तो ये 0.01 होगा, फिर 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 and ultimately it will reach 4. तो ये 4 को अगर हम 0.01 पे डिवाइड कर दें तो क्यूमुलेटेड वैल्यू जो है ना वो 400 के करीब आएगी, मतलब 400 इंक्रीमेंट्स है इसमें, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 400 इंक्रीमेंट्स के बाद ये 4 के बराबर हो जाएगी. Enable bit will become low, DN bit will become what? It will become high. When it is becoming high, ठीक है, the moment the accumulated value becomes equal to the preset value, its DN bit sets. ये set हो जाएगा. जब ये set होगा, creating a false condition at contact this in rung 2, तो this condition will be false, क्योंकि वो उसका opposite है ना, वो set हो गया, वो true हो गया, तो ये false हो गया, क्योंकि ये not function हम इधर लगाएंगे. याद रखें, whenever you see this cross on this, you just put this not get there. तो अब लॉजिक के अपोजिट काम होता है, वो हाई हो गया तो इधर ये लो हो गया, जब ये लो हो गया तो मोटर विल बी स्टॉप और इट विल स्टार्ट, इट विल बी एनर्जाइज्ड और डी एनर्जाइज्ड. De-energized because the L1 is not getting connected to L2 anymore. तो जैसे DN बिट हाई हो गया तो इसका मतलब है कि भाई हमने 40 मिलीसेकंड इंतजार किया और प्रॉक्सिमिटी के सामने कोई बॉटल नहीं आया, बॉटल नहीं है सामने, कैन नहीं है, तो इसका मतलब है कि मोटर को रोक दो, कहीं गड़बड़. ठीक है. A false condition of rung 2 also develops, de-energizes the output and stops the transfer line until the problem is connected. So this is something. तो अब इसमें अगर आपको modification में कहूँ ये है कि भाई instead of 40 millisecond wait for 100 millisecond, तो आप क्या चेंज करेंगे? सही टाइम बेस तो 0.01 है ना, आपने 10 मिलीसेकंड प्रीसेट को सर प्रीसेट को क्या कर दूं? 10 कर दे 10 गुड. फिर 100 आ जाए. So 100 मिलीसेकंड आ जाएगा, गुड, बिकॉज दैट 0.01. ठीक है. अगर आपको कहूँ ये 1 सेकंड के लिए टाइमर को कॉन्फ़िगर कर, फिर क्या चेंज करना? 1 सेकंड के लिए दो चीजें आपके अख्तियार में चेंज करना, एक टाइमर बेस और एक प्रीसेट. और टाइमर बेस में आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 3 है. 3, 0.01, 0.1 1 0.01 और 0.01. या तो 1 मैं देख लेता हूँ फिर से, 1, 0.1 एंड 0.01.
तो अब आपने 1 सेकंड के लिए टाइमर को चलाना है, तो अब आप टाइमर बेस 1 कर दें और प्रीसेट 1 कर दें, या टाइमर यस बेस सर। 0.1 कर दें और प्रीसेट 10 कर दें, या टाइमर बेस 0.01 कर दें और प्रीसेट 100 कर दें। 100 100 आ गए। तो ये वो काम है, यस हमने मोटर को 40 मिली सेकंड के लिए या वटेवर 100 मिली सेकंड के लिए हमने प्रॉक्सिमिटी को सुना, उसने कहा कि भाई मेरे आगे कैन नहीं है। अब आपका डिसीजन है कि भाई थोड़ी देर सब्र करो, 40 मिली सेकंड तक अगला कैन उसके सामने नहीं आ रहा, मोटर रोक वो ट्रांसफर लाइन कन्वेयर को रोक दो, ठीक है। तो ये इसमें अब ये मॉडिफिकेशन भी हो सकती है कि भाई कन्वेयर को कब तक रोके रखोगे, अलार्म तो जनरेट करो ना, ताकि कोई इंसान आसपास हो, उसकी तवज्जो इधर पड़े और वो आ जाए, उसको प्रॉब्लम को फिक्स करे। तो फिर आप कहेंगे कि मोटर को रोक दो, अगर नेक्स्ट 10 सेकंड तक भी कुछ नहीं आता इसके सामने, या 5 सेकंड के लिए भी इसके सामने कुछ नहीं आता, तो फिर अलार्म को ऑन कर दो। अलार्म मीन बंदों को खबर कर दो कि भाई ये तो कोई सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके सामने 40 मिली सेकंड तक कुछ नहीं आया और आपने कन्वेयर को रोक दिया, तो हो सकता है उसके 40 मिली सेकंड के बाद फिर कुछ आ जाए, फिर आप कन्वेयर को चला दें। वो वाली लॉजिक अब इसमें हमने इम्प्लीमेंट नहीं की, ये तो सिर्फ हम टाइमर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इट कैन ग्रो, आई थिंक टाइमर किस में है, टाइमर ट्रैफिक में तो बहुत ज़्यादा टाइमर्स ही टाइमर्स हैं, क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है कि आपने किसी ख़ास टाइम के लिए येलो को ऑन करना होता है, फिर आपने किसी ख़ास टाइम के लिए ग्रीन को, तो इसमें टाइमर बहुत है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, ये एक और एप्लीकेशन है जिसमें आप मिक्सिंग कर रहे हैं। तो लेट्स से 2 पंप हैं, एक से भी कुछ फ्लो आ रहा है, दूसरे से भी फ्लो आ रहा है, 2 मुख्तलिफ केमिकल्स को ला रहे हैं और आपने उसको मिक्स करना है। और आपने मिक्सर के लिए एक मोटर लगाया हुआ है जो कि नीचे एक लेट से उसको मिक्स कर रहा है, स्टीयरिंग कर रहा है, उसको कंटिन्यूसली मिक्स कर रहा है। और इस दौरान आप थर्मोस्टेट से उसका टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं कि भाई ये हीटर भी लगा हुआ है कि भाई इन 2 चीज़ों को लेट से आपने 100 डिग्री सी पे या 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप करना है। तो साथ साथ आप थर्मोस्टेट भी आपको बताता है, लेट से ये 2 लिक्विड्स आ रहे हैं और ठंडे हैं बिल्कुल, आपने पहले सॉरी हीटर को तब तक ऑन किए रखना है जब तक आपका टेम्परेचर 100 मिली सेकेंड तक ना पहुंच जाए, 100 मिली सेकेंड कहना सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंचे। और इस दौरान ये पंप को तब तक ऑन रखना है जब तक ये भर ना जाए, फिर दोनों पंप्स को बंद कर देना है। और लो लेवल भी सेलेक्ट कर रहा है कि भाई अगर ये खाली हो, सारे का सारा चैम्बर ही खाली हो, तो दोनों पंप ऑन कर दो। और मुसलसल जो डिस्चार्ज लाइन है वो पंप 3 है, अगर ये एक ख़ास टेम्परेचर पे आके हम इसको मिक्स कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम पंप 3 से उसको किसी सप्लाई लाइन के थ्रू आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, द सोल्यूशन इज ऑलरेडी आउट देयर। तो मैं एक्सप्लेन कर भी लूँ, लेकिन आई वांट ईच वन ऑफ यू टू फर्स्ट थिंक अबाउट इट। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। अच्छा, इसमें प्रॉक्सिमिटी का क्या रोल है? I didn't see proximity. Where is proximity and what is it doing? सर ये पिछले वाले का है, ये नहीं है। अच्छा, ये सर ये सिलू हाँ ये साइलो का है, ठीक है। तो इसका 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 तो मुझे लगता है हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। आई कैन प्रोवाइड द सोल्यूशन, नेट पे भी बहुत ज़्यादा है, पर लेट्स गिव इट अ ट्राई फर्स्ट। एप्लीकेशन की आपको समझ आ गई है, शुरू में सिर्फ ये करें कि भाई जैसे ही 2 पंप ऑन करें, स्टीयरिंग स्टार्ट कर लें, मोटर को स्टार्ट कर लें। तो इसका मतलब है आपको जब एल लो लेवल कह देगा कि भाई इधर कुछ नहीं है, तो आप खामखा स्टीयरिंग नहीं करेंगे। जब लो लेवल कह देगा कि भाई कुछ थोड़ा भी लिक्विड आ गया इसके अंदर, आप स्टीयरिंग स्टार्ट कर दें। और डिस्चार्ज तब तक नहीं करना जब तक आप एक खास टाइम, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेंगे, खैर अभी मैं खुद से ये
आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट जो प्रोसेस का वो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे सामने हो तो फिर हम इधर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन. बाकी देयर आर मेनी. या दिस वाज द बॉटम लाइन, bottom line. So इसमें they must have a proximity here, yeah, which is detecting these, and I'm not sure. I'll have to see whether it is detecting a jam in the controller or not, and the conveyor or not. So अच्छा, T off delay ये भी कर लेते हैं. T off delay क्या होता है? इस डायग्राम से आपको सही पता चलेगा कि भाई उधर हमने जैसी वो कंडीशन अकर किया, प्रॉक्सिमिटी ने कह दिया कि सामने कैन नहीं है, टाइमर चल पड़ा और 40 मिली सेकेंड के बाद टाइमर एक्सपायर हुआ और हमने कोई काम किया. ठीक है. टाइमर ऑफ में क्या होगा? While the condition of a rung is true, the accumulator value of a timer off delay is reset to 0 and bit 15 and 13 set. 15 and 13 set. 15 and 13 क्या है? Done and enable. वो set होता है. When the AC is equal to PR, the timer stops timing and the output energizes as bit 13 sets. Bit 13 is done. ठीक है. At the same time, bit 14 resets. If logic continuity of the rung is lost before or after the timer has timed out, the accumulator value goes to 0 and any bit that is set resets. The timing diagram shows T on. अच्छा नहीं, sorry, ये तो T on हम कर रहे हैं, T off में पढ़ना चाहिए. अच्छा, while the condition of a rung is true, the accumulator value of a timer off delay is reset to this. Okay, the timer is and this causes accumulator value to begin increment. The timer stops timing and the output energizes as bits 13 and this. अच्छा, अब the timer off delay timer output is used to provide time delayed action. उधर जैसे ये उसने कह दिया प्रॉक्सिमिटी ने कि आगे कैन नहीं है, तो हमने देखा कि भाई 40 सेकंड के बाद मोटर को वो कर दो, चला लो. ठीक है. अब इस केस में क्या होगा, ये एप्लीकेशन समझ लें. सिक्योरिटी लाइट ऑफ अ garage door opener is an example application. Whenever the garage door is open, the light is on. After the garage door is closed, the light remains on for 20 seconds while the driver walks to the house from the car. अब इसमें आपने क्या करना है कि भाई एक कंडीशन अकर कर गया, जैसी गैराज डोर खुल गया हमने लाइट को ऑन कर दिया. गाड़ी से जब आप उतरते हैं तो वो जो दरवाज़ा आप बंद भी कर लें गाड़ी का, तो उसके अंदर एक लाइट होती है, वो 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए ऑन रहती है. इसका मतलब है जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गए, दरवाज़ा हमने बंद कर दिए, लेकिन एक काम है जो अगले 20 सेकंड तक हम जारी रखना चाहते हैं. तो ऐसे में टाइमर ऑफ डिले, मतलब एक कंडीशन को हमने ऑफ किया हुआ है, बट वी वांट टू डू समथिंग, वी वांट टू कंटिन्यू समथिंग फॉर द नेक्स्ट 20 सेकंड. उसमें क्या आता है, कंडीशन टाइमर ऑन में क्या था, कंडीशन अगर कर गया था, ट्रू हो गया था, हमने 40 मिली सेकेंड के बाद एक काम किया, टाइमर ऑन. टाइमर ऑफ में क्या कि कंडीशन फॉल्स हो गए, लेकिन हम फिर भी एक काम जो है वो 20 सेकंड तक करना चाहते हैं. तो बाकी बातें तो सेम है. टाइमर इधर नंबर देंगे इसको T4 5, टाइमर बेस 1 दिया हुआ है, प्रीसेट 20 रखा हुआ है. ठीक है. और एक्यूमुलेटर स्टार्ट होगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, 20 सेकंड के बाद डी एन बिट जो है ना वो 1 हो जाएगा. 20 सेकंड के बाद डी एन बिट, अच्छा नहीं, डी एन बिट सॉरी शुरू से 1 है, 20 सेकंड के बाद वो लो हो जाएगा. Let's compare the two. I think इसमें हाँ
enable bit is the same except that something happened at 3. TT bit is the same, ठीक है, ये शुरू में हाई जाता है और फिर बाद में लो हो जाता है, शुरू में हाई जाता है बाद में लो हो जाता है। उधर TT जो है वो शुरू में हाई जाता है फिर लो हो जाता है, ये उसका अपोजिट है। और डन बिट भी उसका अपोजिट है, शुरू में हाई हो जाता है और TT हाई हो गया। TT हाई का होना मतलब ये है कि भाई accumulator is not yet equal to the preset value, ठीक है, done bit is high, now the accumulator is going on, वो enable condition false हो गए, मतलब वो door close हो गए, ठीक है, enable condition false हो गए, लेकिन एक काम है जो अगले 20 सेकंड तक जारी रहेगा। TT अभी जाग गए, वो 0 1 2 20 सेकंड काउंट करेगा, उसके बाद जब 20 सेकंड हो जाए तो डन बिट को लो कर देगा। So this is the timer of delay. TT goes on when the enable is low. उस केस में TT goes on as soon as the enable is on. और enable को हमने लिंक किया हुआ है किसी लॉजिक के साथ। तो this tells the entire story कि TT बाद में शुरू होगा जब enable low हो जाएगा, ठीक है, when the enable the condition we are attached to. So let's see an example of this. Security, हाँ, example we already have done. I16 is now connected to what? Is it controlled by a normally open limit switch? Limit switch है जो हमें कहता है कि भाई दरवाज़ा जो है वो ओपन है कि क्लोज है। ये क्लोज को डिटेक्ट करेगा क्योंकि क्लोज के बाद हमने जाके लाइट को ऑन कर देना है, ठीक है। The light remains for 20 seconds, ठीक है। So in a timer, okay, when the garage door opens, the limit switch also opens, ठीक है, जैसे ही वो खुल गया limit switch भी खुल गया, वो and makes the logic condition of rung 1 true, and this will be this is an opposite logic, तो जैसे ही वो open हो गया इधर ये true हो गया, ठीक है, because we were doing examine if open condition, जैसे ही वो open हो गया इधर ये true हो गया, done bit output of the timer is set, इसी के साथ ही done bit set हो जाएगा। So this is your done bit, it goes up, ठीक है। Now what happens is continue to output, and as long as this is high this light will be on, ठीक है। The examine on done contact becomes true and provides continuity to this, which turns the light on. As soon as the garage door shuts, तो ये condition false हो जाएगा। The limit switch closes, the condition of ring 1 is false. The timer of instruction begins to time. अब ये time चल पड़ेगा, ठीक है। While the timer is timing, the accumulator will be starting from 1 2 3 4 5। इस दौरान वो garage door closed है, अच्छा, और 1 तक 20 तक जैसे ही पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, causing the light to stay on, the done bit remains on, the done 20 सेकंड के बाद done bit will become 0, done bit will become 0 and the light will be off. So it's a timer off delay. We are doing something, once this condition has gone false we started timing something and we keep on doing it for let's say 20 seconds, and after 20 seconds ये आउटपुट इसी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर टाइमर ना होता तो ये उसी वक्त ऑफ होता जिस वक्त ये लिमिट स्विच क्लोज है, लेकिन हमने चूंकि बीच में टाइमर लगा दिया तो अब इसका ऑन होना इस टाइमर के साथ लिंक हो गया, एंड दैट्स व्हाट वी आर डिलेइंग द turning off this light by this certain amount. I hope I am explained it well. You have to do this in which application it can be easily incorporated. Let's say door में there is no yeah light नहीं है, otherwise we could add a light and when the door is
even shut, we can keep the internal light on for 20 seconds, and after that it goes off automatically. So this was the timer on and timer off. I'll come up with more example next time. There is mm, one more left which we'll do next time. It's called retentive timer on delay. It's similar to the T on with one exception. Instead of losing its accumulated value when its run condition goes false, it is retained. Accumulated अगर कहीं पहुंचा हुआ था, let's say 120 पे, so next time it will start from 120. We'll see this next time. Let's stop this for today. We can cascade timer, मतलब एक timer जब done उसका high हो गया, उसी से हमने दूसरा timer चलाया, तो with this we can increase the amount of delay. Let's say 20 सेकंड के लिए वो चला, फिर 20 के बाद उसका maximum let's say पहुंच गया, तो फिर हमने ये वाला टाइमर चला दिया. जिस तरह सेकंड जब 60 पे पहुंचते हैं तो फिर हम सेकंड को रीसेट कर लेते हैं और मिनट को फिर शुरू कर देते हैं. फिर मिनट जब 60 पे पहुंचते हैं तो मिनट को रीसेट कर देते हैं, फिर आवर्स. तो इसको कैस्केडिंग टाइमर्स कहते हैं in order to generate delays as big as days and hours. So this was the important lesson topic for today. We studied timers. थोड़ा सा आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट में, तो दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस. प्रोग्राम लिखें